एलिस पेरी, नैट सिवर और डिवाइन केयर और मंदना कौर, captain vice captain options, small league options, grand league options, and a lot more only on Asli Fantasy. Which one? Cricket.com. Which else? So welcome everyone to Cricket.com's Fantasy Center. It's that time of the season. Lots of games coming up, lots of fantasy previews to do, all only on this platform that you love so much. So don't forget to like, share, subscribe. But for now, let's get cracking. It's showtime. हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका cricket.com फैंटेसी सेंटर में, द होम ऑफ असली फैंटेसी क्रिकेट, as you can read on the screen, for all the right reasons. All of us have played a lot of fantasy. We've discussed a lot of fantasy. Now it's time to play fantasy only on the cricket.com app, newly launched. So do ensure you check it out. लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. डाउनलोड कर दीजिए iOS, Android दोनों के लिए. Now you'll ask, home of Asli Fantasy Cricket. What is Asli Fantasy Cricket? Asli Fantasy Cricket is the OG fantasy. Contest close out 1 hour before the match starts. 1 hour. Yes, it's not toss time, not start of the game. 1 hour before the start of the game. So na toss ki janjat, na 11s ka tension. All you have to do is back your skills, make a good team, 7-4 combination, age old जैसे पहले था. So yes, that is what this is about. प्रॉपर बेसिक जैसा हमने फैंटेसी की शुरुआत करी थी. सो दैट इज व्हाट दिस इज गोइंग टू बी, एंड वील कम एवरी डे एज मच एज वी कैन, सो दैट वी कैन हेल्प यू मेक प्रीव्यूज फॉर ऑल दीज गेम्स. तो लेट्स गेट क्रैकिंग. पहले ऐप के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, बट उसके पहले डू रिमेंबर दिस गेम इन्वॉल्व्स फाइनेंशियल रिस्क एंड कैन बी एडिक्टिव. सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क. टॉकिंग अबाउट द ऐप, आप डाउनलोड करेंगे, सबसे पहले आपको राइट में जो स्क्रीन है वो आपको दिखेगी इन टर्म्स ऑफ द फिक्चर्स दैट आर देयर फॉर द ऐप एंड फॉर द डे. तो वहां से यू कैन पिक एंड चूज योर गेम्स. उसके बाद यू कैन सी होम, माय मैचेस, जहां पे आप जो मैचेस खेलेंगे वो आपको वहां पे दिखेगा. रिसर्च, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके लिए यू ऑफन कम टू cricket.com फॉर द ऑल द स्टैट्स एंड नंबर्स. So that is what you will see on your left fantasy center for every game that's there. You will see fantasy stats, you'll see options to build your team, and of course AI teams, जिसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे. So that is something you should definitely keep an eye on. इसके बाद whatever offers that are there on the app, you'll see that on the offers part that you can see on the left, on the right of your screens, and then you have your own profile, जहाँ पे of course you will verify your account, KYC, etc., so that when you win, you can withdraw. So that is about the app, and do ensure and make sure you remember deadline 1 घंटे पहले की है. So that is something that you need to keep in mind. Or now that we've done with the talks for the app, hope you have downloaded already. Let's get cracking with the fantasy preview for the day. That is Bangalore versus Mumbai. Very crucial game this for Bangalore, क्योंकि मुंबई को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, is what they will feel based on history. But can they do it? Will how can they beat them? Let's discuss key game factors in this very section. तो सबसे पहली बात, नो योर वेन्यू. एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैच हो रहे हैं. हमने देखा है अलग अलग तरीके की पिचेस है. देयर हैव बीन वेरियस काइंड्स ऑफ डेक्स, which means there is something for everyone. We've seen 7 matches, highest total is 196, but lower scores have also been registered. So you need to be very sure how you're thinking about the game. Mumbai, Bangalore, two very good sides. You should see them bat well. One by team batting first. Again, Delhi should have won batting first. UP eventually lost and had helped Bangalore to win batting first, and Delhi have also won batting first in that last game. So have that context और अपने gut feel पे जाइए in terms of what you think will happen. But क्योंकि दो strong teams हैं, you expect a close battle and toss ineffective eventually because of the quality on play. That's hopefully. तो wicket split की भी अगर बात कर लें तो it is 68% to Pacers. They love that a lot more as compared to spin. But remember, this is the type of game where you've seen Amelia Kerr, Jess Jonathan, they have bowled in the end. तो वो लोग ने end overs में bowling करी है. So ensure you keep that in mind when you pick your sides. So overall, it has something for everyone. Neutral है, pace friendly है, as we've seen what Marizan Cup did in that game. And if you get a good score,
इट इज अगेन इट लुक्स ऑड टू से फर्स्ट बैटिंग फ्रेंडली, बट अगर आप अच्छा स्कोर कर दें तो यू कैन पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर एज व्हाट बैंगलोर एक्सपीरियंस्ड इटसेल्फ। तो आगे बात करेंगे और इन टर्म्स ऑफ आरसीबी एंड मुंबई। तो दो मैचेस हुए हैं इसके पहले, बोथ मैचेस हैव बीन वन बाय मुंबई चेजिंग। वन गेम you had Haley Matthews score well, and the other you had Amelia Kher do well. So remember, teams have preferred to chase and do well, but overall, now that we're discussing a fantasy which is before the time of the toss and 11s, you are going to make a very even kind of a team, but you can still back your gut feel picks, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। तो बाकी एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, चेजिंग बायस रहा है थोड़ा in terms of 7 games so far. 2-1 by batting first, 5 by batting second, and scoring range, as we discussed, so far the average score in the first innings has been 148. So batting does get easier in the second, but it may not always be the case in that sense. So let's get to key stats now. Key information for key players from both the sides. सबसे पहले आरसीबी की सबसे बेस्ट बैटर, एंड दैट इज गोइंग टू बी स्मृति मंदना, मोर सो विद पेरी बैटिंग एट 4, डिवाइन नॉट हिट क्लिकिंग, डिवाइन के बारे में आगे बात करेंगे, बट सबसे पहले बात करते हैं सबसे बेस्ट प्लेयर स्मृति मंदाना की। हु कैन ट्रबल स्मृति? एंड यू कैन सी दैट वन नंबर दैट्स देयर इन 5 मार्क किया है। द मैचअप इज देयर विद नैट सिवर, एंड शी इज ओपनिंग द bowling at times. So if Sharma Misma doesn't play, Nat Siver could be a matchup to look out for. Batting first, batting second. Again, if the pace is bowled at the right time, I think you expect Mandana to do well. But that is a matchup to keep in mind. Haley Matthews will bowl to her. So those are the two people who you think should trouble Mandana the most. But hopefully, now that the first WPL 50 is done, आगे she'll continue to score. तो मंदना के मैचअप याद रखना, टीम में तो आप जरूर पिक करेंगे, पर अगर रिस्क लेना है तो क्या आपके मन में कैलकुलेशन चलेंगे, उसके हिसाब से यू कैन पिक द अदर ऑप्शंस। टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर फ्रॉम द अदर साइड, दैट इज नैट्सिवा अगेन। दो मैचेस में रन आउट हुई हैं, हर बार नहीं होगा। हेली मैथ्यूज वांटेड टू गेट रन आउट, बट स्टिल शी डिड नॉट गेट रन आउट, एंड नैट्सिवा ओनली गॉट आउट। बट हु कैन ट्रबल हर? एलिस पेरी। दैट नंबर इन रेड इज देयर इन टर्म्स ऑफ 6 डिसमिसल्स टू एलिस पेरी, एंड जॉर्जिया वेरम ने भी परेशान करा है। पर याद रखिए, जॉर्जिया वेरम काफी लेट आ रही हैं, तो वो भी एक क्रूशियल पॉइंट हो जाता है आपके लिए कि अगर मैचअप शुरू में हो रहा है तो हाउ लाइकली इट इज। Now, Nat Siver could eventually score a lot of runs before Perry and Wareham are given the ball. तो ये चीज ध्यान में रखना। बट इफ दे बोल फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ पेरी एंड वेरम जल्दी बोल करते हैं, सो दैट इज वेयर you'd want to worry कि how will Nat Siver go about it. So those are the two key matchups for each player from each side, one from Mumbai, one from Bangalore. आगे बात करते हैं सिंपल स्ट्रेट टू द पॉइंट, द अल्टीमेट 11, व्हाट कैन बी द बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन। अब तक अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम ये आपके लिए रोज कर सकें। एंड डू लेट अस नो हाउ यू फील अबाउट इट। We'll take all your comments. Do not worry towards the end. So don't worry about that as well. Now let's talk about the ultimate level. Wicket keeping options. Both of them, Richa Ghosh, Jastika Bhatia, आपको लेना है टीम में, depending on the toss nahi, but depending on their role, which is wicket keeping, and they're giving you a lot of points. We've seen a lot of stumpings, catches happening. तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। दोनों ही could contribute no matter where, as I said, pitch कैसी भी हो, conditions कैसी भी हो, keepers if they take 2-3 catches, a couple of stumpings, आपको एक बैटर जितने पॉइंट्स मिल जाएंगे। और हमने देखा है इन WPL बैटर्स से ज्यादा ऑलराउंडर्स चले हैं, क्योंकि विकेट्स भी गिरे गिरे हैं इतने। तो कीपर्स विल ऑलवेज बी द गेम। So for this game, I'll probably pick both Richa and Jastika. But yes, if you feel one of them could have a low score or a poor game with the gloves, तो फिर आप उन्हें ड्रॉप कर सकते हैं। Then let's come to batters to back. आप एक्सपेक्ट करोगे कि कौर शुड बी बैक इन दिस साइड आफ्टर अ निकल इन द लास्ट वन। तो अगर आपको कुछ भी अपडेट मिलता है 1 hour बिफोर द गेम टाइम, देन इंश्योर यू मेक द चेंजेस अकॉर्डिंगली। बट डोंट वरी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट का भी ऑप्शन है। सो यू कैन टेक 11 प्लेयर्स एंड 1 सब्स्टिट्यूट प्लेयर, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। सो डो नॉट वरी, यू आर नॉट गोइंग टू मिस आउट ऑन एनीथिंग। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, फील फ्री टू चेक आउट द ऐप इन एंटायरिटी। वहाँ पे FAQs भी हैं, हाउ टू प्ले भी है, तो आपके सारे डाउट्स वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। बैटिंग की बात करते हैं तो मंदना और कौर ऑब्वियस पिक्स हैं। मंदना के मैचेस हमने डिस्कस करे, बट बाकी के जो बैटर्स हैं उसमें यू हैव मेघना दैट यू कैन ट्राई, बट अदर मुंबई बैटर्स, मुंबई हैवंट यूज्ड देम एट ऑल। तो आप टीम में तो पिक कर लेंगे, बट उन्हें बैटिंग मिलेगी कि नहीं, दैट वी नॉट श्योर ऑफ। सो इट इज बेटर टू गो विथ ट्राइड टेस्टेड प्लेयर्स हु वी नो कि इनको रोल मिलेगा विद बोथ बैट एंड बॉल। सो इट्स बेटर टू गो विद दोज प्लेयर्स
who roles are very, very important to the side. So just two batters for now, and you can, I don't think you will drop either of them. But if you want to do, please go ahead and do it. Always back your gut feel. Remember, it's your visualization. You should always back what you think about the game. Now, all-rounders is where there is a house full, complete house full. Everybody's there. Perry, Divine, Molinu, Amila Kher, Haley Matthews, Nat Silverbrand. And again, the most obvious choice for the captain is also Nat Silverbrand. Bat with the ball. She's very, very, key player for Mumbai. And if Kaur is not playing, even if she's playing, you'll know she's the one they'll always go to for the key overs. So let's see how that pans out. But any options that you can try now? Perry, I expect Nadali Club to be out for Perry because you expect her to be fit. So that is the one change there. And Sophie Molyneux again, she could bowl a lot to the righties that are there in Mumbai because Yastika is the one option up top, but after that you have Skiver, you have Matthews, you have Kaur. So that is a lot of righties that she can bowl to. So she can be a crucial part of your setup. So those three all-rounders from Bangalore, three from Mumbai, any of these can be captain vice captain options for you, but we can discuss about them ahead as well in terms of who can be that big drop or that big pick for you. For now, I think the most safest options, because we're also playing a fantasy that is an hour prior without the benefit of toss 11, we are going purely on skills, Nat Silverbrand and Sophie Divine. Because again, Divine is bowling key overs, and once she starts going with the bat, she's unstoppable. So I think two best options. पेरी इतनी bowling नहीं कर रही है, तो इसके लिए पेरी के साथ जाना थोड़ा डाइसी है. मैथ्यूज का फॉर्म थोड़ा इफी रहा है. So those are the two options that you can feel risk with. For Amelia Kerr and Sophie Molyneux, just have to be very strong. If they bowl in the end overs, batting first, batting second, they could play a very crucial part. So that is most of the all-rounders and potential captaincy, vice captaincy picks discussed. अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, bowling. अब यहाँ पे शबनम इस्माइल, यू एक्सपेक्ट हर टू प्ले. अगर वो नहीं खेलती, आपको लगता है कि नहीं, आई थिंक इजी वोंग विल प्ले, then she is not a bad option to try at all. And this is the one place where you can take your risk with the bowling section because you have a lot of options. You have Georgia Vere, you have Izzy Wong, you also have the first differential pick that I wanted to say, which I'll talk more about in the big tip section. That is Saika Aisha. Why? That is for later, but remember that name. She could really bowl a lot and take you wickets, जैसे जेस जॉनसन ने किया in the previous game against Bangalore. So शबनम इस्माइल को मैं अभी के लिए लेके चल रहा हूँ टीम में. अगर आपको लगता है कि नहीं खेलेंगी, तो आप उनकी जगह किसी और को भी पिक कर सकते हो. And once you make your 11, you will get an option to pick a substitute player. So substitute player आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा है. मैंने ऐड किया है इजी वोंग को, एंड दिस इज इवेंचुअली अवर फाइनल 11 जैसे हमने पहले डिस्कस करा. 2 कीपर्स, 2 बैटर्स, 6 all-rounders, all the big players noted there, and Shabnam Ismail. Now, the 12th player, as I said, the substitute player is, अगर इनमें से कोई नहीं खेलता, तो that player will be replaced by the substitute player. तो अभी के लिए मैंने इजी वोंग को ऐड किया है क्योंकि the one player that I think could potentially miss out is Ismail. तो उनके बदले स्ट्रेट स्वैप हो जाएगा इसी वोंग का. अगर आपको इसमें डाउट है कि कैसा सब्स्टिट्यूट प्लेयर वर्क करता है, क्या है, यू कैन सी द आई सेक्शन, यू कैन सी द आई बटन ऑन द स्क्रीनशॉट. ऐप में जाके आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि हु इज रिप्लेस्ड वेयर एंड व्हेन इन टर्म्स ऑफ योर सब्स्टिट्यूट. कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. जो नहीं खेलेगा उसको रिप्लेस हो जाएगा, और अगर ज़्यादा है तो किस ऑर्डर में रिप्लेस होगा ये भी मेंशन्ड है, और अगर कैप्टन नहीं खेल रहा है तो वो भी रिप्लेस होकर कैप्टन हो जाएगा. एवरीथिंग इज नोटेड एंड मेंशन टू यू इन द ऐप, सो डू इंश्योर यू चेक इट आउट. और आपने अगर डाउनलोड नहीं किया अब तक तो प्लीज़ कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो दैट इज़ द फाइनल 11, मोस्ट लाइकली द 11 दैट यू विल सी of most people, but that's where the differential pick comes, right? That's where the big tip matters, and that's also where if you are somebody who wants to use AI teams, then that is what you will also get on the app. तो ऐप पे अगर आप जाएंगे जब फैंटेसी सेंटर में, जैसे हमने बात करी थी शुरू में, इन द फैंटेसी सेंटर स्क्रॉल करेंगे आप नीचे, यू विल गेट 4 ऑप्शंस फॉर योर पोटेंशियल टीम्स. टीम 1 सेफ, टीम 2 हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, टीम 3 हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, और टीम 4 top picks on cricket.com. तो डेटा के हिसाब से AI will make teams. If you want to play with them, you can go ahead and do it. But remember, eventually you have to back your visualization. So this option will also be there on the app. जैसे मैंने पहले कहा, there is a fantasy center, there is fantasy stats. आपको matchup,
प्लेयर रिकॉर्ड एट द वेन्यू, ये सब कुछ ऐप में ही मिल जाएगा। तो आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाएगा अगर आपको कुछ और तरीके का डेटा ढूँढना है ऑन द वेरी गिवन ऐप। सो एंश्योर यू डू दैट। एंड नाउ कम्स द बिग टिप, जैसे मैंने कहा सोफी डिवाइन वाइस कैप्टन रखा है उन्हें अभी, पर जैसे मैंने बात करी थी, she can either click or she can really not be the guy, the person who wins you big. So if you want to take a risk with her in terms of if you feel Nat Saver will bowl to her really, क्योंकि आपने मैचअप देखे थे मंदना और डिवाइन, दोनों के खिलाफ नैट सिवर के मैचअप्स बढ़िया हैं। तो अगर आपको लगता है कि नैट सिवर दोनों को डिसमिस कर लेंगी, कीप डिवाइन इन द साइड, don't make a captain vice captain. Potentially, then you could make a Elise Perry a vice captain, or you could make Richa Ghosh, or you could make Sophie Molino if you want to as your vice captain option. So that is the one part of the big tip for the day. That is, if you want to take a risk with Sophie Devine and Saika Ishak, जिसकी हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले, she could do the role that Jess Jonathan did for you in that very game, the previous game that they lost. So अगेन अ वेरी फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड 11 है। एंड जो हम इतने टाइम से फैंटेसी खेलते आ रहे हैं, हमें पता है 8 और 9 प्लेयर हम सभी के सेम होते हैं, बट इट्स दोज 1-2 प्लेयर्स, द 1 or 2 रिस्क दैट वी टेक दैट इवेंचुअली आर द डिफरेंस बिटवीन वेदर यू विन और यू लूज। सो एंश्योर यू आर वेरी थरो विथ योर होमवर्क इन टर्म्स ऑफ आपको क्या करना है, एंड उसके बाद व्हाट यू कैन डू इज मेक योर टीम्स अकॉर्डिंगली, टेक द हेल्प ऑफ एआई एंड एंश्योर that you are backing your visualization. So that is what it is for this very game from my end in terms of information for the game, for the app, and especially that punt pick. तो साइका इशा अगर विकेट लेती हैं तो याद करेंगे आपको डेफिनेटली। If you have any questions about the app, do not hesitate to reach out to any of our social media channels for that matter. And yeah, that should be it for this very game. We'll keep coming एवरी डे 3 o'clock, दिस इज द टाइम, नोट कीजिएगा। आज सरप्राइज फैक्टर है आपके लिए, बट व्हाट एल्स वी हियर फॉर। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कंपनी इन द फ्यूचर शोज इज वेल। cricket.com fantasy center, home of asli fantasy cricket. I'll see you very soon. Take care. Bye bye.